रहा है, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। क्या ये बंदे जाके ऊपर मारेंगे? एआर की टीम है और टीम नंबर 6 से 3 बंदे, एक बंदा तो हमने देखा यार जला के भाई बंदों को मार दिया था भाई। बहुत ही खतरनाक दिखा रहा है जिस तरह से F4 के बंदे खेल रहे हैं। हर एक में F4 जहां से कूदे वहां से ऑब्वियसली फॉल डैमेज तो लेंगे। गाइस मुझे
Red zone will be activated. history as we bring you India's first ever PUBG Mobile Campus Championship 2018, presented to you by Oppo F9 Pro. And this battle is about to get fierce. And this battle has seen too many hurdles, too many kills, all the way up to make it to the finale. To win away this glorious, magnificent trophy is going to be in hands of the winning team this evening. Can we have a big round of applause? And ladies and gentlemen, the winning team, not just the trophy, is also going to get away a whooping 15 lakhs in prize pool. Wow! And you know what? Hang on, not just that. The winning team will also get a chance to be a part of the PUBG Mobile Star Challenge 2018 that's happening in Dubai. What? Really? Oh, yeah. Oh, well, you know why? Because 100 million plus PUBG Mobile fans all over the world. We got 250k registrations, out of which 80 of them knocked everyone to ashes. And we have 20 teams who have made it to the finale, the grand finale. Grand finale, 5 rounds, and the best of 5 will be the ultimate winner and take this trophy home. And you know what? For all you viewers online and offline, if you're wondering what is that you're going to take back home, trust me, you're going to be feeling lucky, and we're going to be giving away Oppo F9 Pro mobile phones in between the matches right after the wins. So get ready for that and stay tuned for more. And here we go. And are you ready? Get ready for some high adrenaline action. 1, 2, 3, here we go! For more insights, over to the panelists. There we go. Thank you so much. Stay tuned for more. Hello. Well, thank you so much. I am WTF Moses, joined by Matrim and Porlosaurus. Hello. We will be bringing you the action for all the games today. All our players making their way down onto the stage. We saw these guys practicing. We've seen them play through the skirmishes and stuff like that. We just saw a terrific match as well with the goes in the crowd. I mean, it's our first time in India, and already we're super happy to be here. Matt, it's been an experience. Dude, everybody is so excited for PUBG Mobile here. Like, the audience has just been ridiculously awesome. Everybody that's involved inside of the production, everybody is psyched to have this event here. And I just gotta say, I love being a part of it. I mean, how can you not be pumped up after that video? You hear the pan hit and then the gun cocks and then the beat drops, and it's, you know, your brain, your face just melts off. It's amazing. Yeah, it was a really incredible production so far. I mean, the stage here is amazing. The crowd's been awesome as well. So thank you guys for participating, and obviously at home as well. So we have now 80 players, 20 teams going at it for a massive prize pool, not to mention the chance to participate in the Dubai Championship. And there's a lot on the line, Matt, and we've seen already in the initial stages it's very competitive. Well, let's just talk about this. 200,000 people involved in just getting to this stage of 80 that then carries its way forward to make a chance to not only just get prizes here, but have that chance at Dubai, which I gotta say, people around the world, I want to go to Dubai. Everybody I want to go to Dubai. This is like ridiculously awesome event. So naturally, we got a couple of people that are going to be that in the area. They want to make it to Dubai. This is their area. They want to compete, and they want to make it to that stage. You know what? I was walking around talking to the players, and I asked every single one of them that would talk to me anyway. Some of them very some of them are so competitive they were like, don't want to answer any questions. They're like, you get away from me. But I said, who's the best team here? And every single one of them said, us. So, you know, the competitive nature is very hot here, and these guys have gone through a gauntlet to get here. Yeah. I mean, it's really, Poro,
I mean, for all the registrations, 250,000 plus people to come down to 80. That's a huge accomplishment. Well, if you come down to 80, and you know, you have to have that competitive spirit, right? You have to come in here thinking that you're the best. You have to come in here thinking that nobody else can beat you in a firefight. You need to have that kind of confidence if you're going to come out on top here and end up with the prize pool, the trophy, and a trip to Dubai. Well, the other aspect, Matt, and this is something that's a bit of a factor, is that these are all students. Yeah. This is not open to just anyone. This is for college and university students to compete against each other. So this is time away from studies. And we had a conversation earlier. There's a couple of parents out in the crowd, so the support is definitely there. But I mean, if you're taking time, little support. You can see some of them are kind of sitting there like, some skeptical parents out there. But I mean, if you come home with that prize, whatever our host said, you know, keep playing. Just keep playing. You'll be fine. Look, if it makes you feel any better, parents, I'm a college professor in the United States. I think it's okay. They'll be all right. They'll be fine. It'll be all right. So, I mean, all competitiveness aside, one of the major factors, at least in the games that we've seen, is the ability to be flexible and to maintain that aggression through the game. Because if you can clear out the area around you, you can continue to fight and just get farther into the game. Well, it's all about adaptation. You have to make sure you're gathering information. You have to make moves based off of that, and then you have to hit your shots. It's difficult. That's the mechanical part of it, but naturally we are dealing with a mobile-based game here, so you got to have the mechanical skill behind it. But then you have to have the ability to figure out what is the best move. How do I deal with the circles that come at me? How do I deal with the teams that are surrounding me? And how do I adapt to beat all of them? Absolutely. I only have 5 games to do it. Yeah, I mean, and it's all about zone control, right? You know, these guys wouldn't be here if they couldn't land their shots. I mean, everybody on this stage can land their shots. Now the question is, how can they play as a team? How can they get those angles, those correct fire angles that they need to come out on top of these team fights? Well, I mean, the way you play the game is so different than on other console or PC. You have to maintain constant awareness, and you also have to good decision making as well. All these players, you know, currently getting set up, they have to be strong-willed, and you have to stay calm. This is a big prize. You're at a big stage. This is India's first big PUBG mobile tournament, and you're in a crowd. There's people watching you. This is a situation where that pressure is a big deal. And you have to count in the fact that there's also going to be this game hinges on communication. So coming down and having an audience really watch you play a game for the first time can be nerve-wracking and really cause a lot of players to kind of clam up, not convey that information. And in PUBG, that's deadly. If you don't say, hey, there's a guy over there, and then you hop in a vehicle, your squad's done. Yeah, it's absolutely going to come down to how well these guys have learned to play together, how well they've learned to communicate in those high-stress situations. When things start to go south, you need to have that quick communication, you need to have that clear communication, and you can only get that with friends that you've been playing with and struggled to get to this point with all through this 200,000 so registrations to get to these final 80. And I mean, the teamwork and the stress aspect is one of those things, but I mean, looking at the games themselves, it's going to be a situation where that first game, that second game, you're going to be nervous. And you know, you can be the most calm, cool, collected person in the world. You're going to be nervous that first game. So that conservative play style, not wanting to take risks, I think that's going to be a big factor. Well, there's also the other side of that. And what happens if you have a bad 2 games? There's only 5 games inside of the way that this is broken down. Yep. So you have to be able to rebound. You have to have the mental fortitude to go, okay, what happened last round does not matter. I'm going to come back and I'm going to get this. Yep. Because if you don't have that, I mean, again, only 5 rounds. You don't get a chance to have 2 bad games in a row. Yeah. And I mean, for those of you who are maybe unfamiliar, Poro, is there any aspect of the game that you think is more important as far as that first game, the second game? Well, if you go and look at the point structure, the point system, right? 100, it's I think 500 points for first, and then there's a big drop off, right? And then 20 points per kill. So basically, once these teams start winning, it could start a steamroll. So that when you say that you can't afford to have multiple bad games in a row, you're absolutely correct. Well, I mean, it's all about the players, and we've got one set up already. So let's take a quick look at one of the interviews with the players. My name is Sakriya Puri, and my team name is the Terrifying Nightmares, and the squad members of the Terrifying Nightmares are Mehul De, Anand Puri and Amit Sharma. I am Tushar Singh. My team name is the Ravages and I am this leader. My game name is TS6655 and my team members consist of Varun 5006, Mardunga Tuj and Askela 69.
My name is Abhijit Singh. My team name is Chiefs. Team name is Phoenix and my game name is Snipe Down. And my real name is Sejal. If you go to see like the main roles of our team members, Mehul De and Anand Puri, they actually support me, like Sakriya Puri and Amit Sharma. If you go to see the nadir in our team, it's actually me. And if we have to attack or defense, then it's Amit Sharma who will come first. And then there will be Mehul De and Anand Puri, and then it will be me. Like it's always Amit in the first place, and in the end it will always be me. Many of us prefer auto, and two people of us are preferably sniping people. They do snipe, they prefer Kar 98 and all the kind of gun, Kar 98 M24, and we do pretty well with it. Basically, we all are snipers, and the Dipanshu one is supporting character. He supports us when we try to try to advance to the zone like we are in the back. My role is spotting enemies and killing them in the mid-range. Deathstroke is the sniping one, and the Nova is also master at sniping. And Autocratic is at killing people, fast reactions. He gives fast reactions. We don't play that much, but because we all are like, right now we are in college, we have to study and everything. In a day, around 1 to 3 hours, that's the amount of time we play every day. PUBG is the only game right now that we play regularly. Since season 3, like the season 3 of PUBG. Since it was launched, the mobile version, since it was launched, we have been playing through that, through all time. We play 2 to 3 hours every day, daily. We have been playing it from season 2. If you go to see, PUBG Mobile is actually a great game. If you go to see the graphics and everything, it's really good. It's the best game you can ever have on your mobile device. PUBG Mobile is basically light for action and battle royale. As we all know, battle royale games are very much preferred today. Most of the people prefer the battle royale games and like to be a single guy who conquers all of the battleground. We most like sniping only. Sniping from far away. It's really addictive. Once you start and once you die, you seem to think, why did I die? I need to win it. And then the game is still on, and it's never ending. According to me, the expectation from my team, we are the best according to us. But we cannot underestimate the other people too. And it also depends on our luck about the zone where it actually is. And yeah, we are pretty confident. Our expectations, they are pretty high, by the way. We are expecting that we will definitely secure a good rank, and we are confident enough. We have played till now. It's been a great journey, and we hope that we'll fly out with flying colors. We think we can win this. It's good. We have been a very good team. Our semi-finale was a really good one. Our team has really planned strategies that will work in the finale as well. So we have decided to win it. Oppo Selfie Expert. It's been like 6 months. It was pretty difficult, but we made it. It's getting better day by day. It's getting big. Well, we just heard from the Chiefs. I am WTF Moses, joined by Matchman Porosaurus.
One thing I wanted to mention that before we actually got into the last segment was the fact that, you know, stress and factors kind of a thing. India's esports scene is still growing, and I mean, especially with a mobile game as big as PUBG Mobile is concerned, this is a big factor for kind of setting the stage for who's going to be the kings of India PUBG esports moving through this. And I really, this is a big deal. This could be a potential career for some of these guys. Yeah, I mean, let's start off with talking about the prize pool. This is like life-changing amount of money to start off with, so that's a big factor inside of it. Especially as a student. Especially as a student, and remember, we don't have all signed teams here. These are all just people that made their own teams and had, I gotta say, some pretty witty team names coming through, all things considered. But I really just love to see how, like you're talking about, this is a shape and scope for what could be happening. I mean, you can see the audience. We got a huge audience that's here. Stage is awesome. You can see that everything's starting to come together for India esports, and I love it. Well, we spent so much time around it, Poro. I mean, we've seen esports events all over the world, and this is right up there along all of them. I mean, the production here has been terrific. So I guess we have a request as a group of individuals new to India esports. Who do you think is the best player, the best team here? Don't forget to tweet us at WTF Moses, at MatrimGG, and at Porosaurus_NA, and let us know who to look out for, because I'm interested personally to see who is going to come out on top and see, you know, who's going to be the king moving forward. Yeah, I mean, there's a lot of really. I gotta say, even on the names, like that's one of my favorite things about going to a new region is just seeing team names and player names, because it kind of tells you a little bit about who they are. Like naturally, we just saw a great interview coming through from Snipedown. I immediately, whenever you get a name like Snipedown, you know, okay, this is the person that's going to have all of the sniper weapons. AWM goes to her every single time. So it's a little casual. I know you were excited mostly about the anime names, though. I am excited about anime names. Let the interweave out. We have a team here that's named after One Piece. How can I not be excited about that? Anime names, one of Matrim's favorite, no matter what game he's watching. So the lobby is currently being created. The players getting ready to get started. You can see it on their faces, especially that guy there. He looks like he's excited. He's ready to go, man. So, Matt, who are you looking at? I mean, we don't really know, but I suppose if you're looking at the way the last map and the way that PUBG Mobile plays out, the factors of rotations, keeping them tight, making sure you come on the edge. We saw that in the first game today, the show match. Do you think that people are going to be playing that center strategy or the edge strategy? Well, one thing I'm going to be keeping a close eye on is who manages to move into inner positions, essentially manages to gatekeep. Like if you're on the outside, not yet inside the safe zone, who's got the wherewithal and the knowledge to go, okay, there's two teams next to us, let's circle in and let's wait for them. I think that inside of PUBG Mobile, small rotations seem to be a big benefactor inside of it. If you can get into a great spot and catch people unaware, you're great. I mean, as we saw earlier, looting lightning fast on PUBG Mobile. You don't need to spend a lot of time looting. So I'm looking at the team that can loot up quick, get their vehicles, go center circle immediately, find themselves a nice location to hold down. But the other thing that you notice, hardships really impact the map here, and especially in PUBG Mobile, you see things go way to the side very often. So it's rare that you're going to be able to pick a compound and it's going to be able to be something that you can stay in for a long period of time. So holding onto those vehicles, absolutely key. So it looks like all the players have entered the lobby and the map is starting to tick down. We are getting very close for the plane to be in the air for game number 1 here at the PUBG Mobile Championship, the Campus Championships. And crowd, are you ready for the game number 1? There we go. There we go. They're awake. The plane is in the air, and we are underway. And now it's going to be the setting game, the first game. Who is going to be the victor? And what kind of plane do we end up with? There we go. Let's go ahead and get the good skins on the plane. There we go. It's the first round. You got to make sure you're coming in with some style. Got to get the good plane skin. Poro, thank you so much. Poro will be joining us back for the analyst segment after game number 1. And we'll see now who's going to get brave and drop into those hot spots first. We have the military base and Pachinki being the popular spots. Well, this becomes the big factor for it. Naturally, these guys are going to be playing against each other for the first time, so it's going to be cool to see how they make a play based off of this. Who's going to choose to drop where? And are we going to see any contested drop locations? Not a lot of people dropping at the first part of military base, but now that's starting to make its way over the canal. Everybody's starting to drop, do that spread, get some information as they make their way across. Could actually see a lot of people heading over towards farm, maybe that Milta area, depending on how far they want to stretch, but not a lot of attention looks like it's going towards Pachinki or military base proper. Look, just one team down there right now.
So looking at the way the map has set itself up, the plane's still not quite empty. Players may be dropping late, and we talked about this at the beginning. The conservative strategy. Who is going to avoid those early skirmishes? And really, this is setting the stage. If you can have a good showing in game number one, it's going to be so important going into the later stages, especially if you can't have a good game two or game three. Having a good first game is so critical. And look at that Georgia Pool area, going to be filled with players. Oh, Georgia Pool. It could potentially support this amount of players. It's all going to depend on how people are eyeing each other on drop. Looks like we got some that are heading over towards crates. It's going to be Team 14 making its way over there. Team 16 looks like it's going a little bit further up. But just like you're talking about, momentum is really big. For those of you guys that haven't watched a lot of how PUBG Mobile kind of plays out, we're going to have 5 rounds here. You get points based off of placement. We were kind of hinting about this as we were moving through the desk. So naturally coming out in first place gets you that 500 points with 20 points per kill. So survival is king inside of this. Well, there's also the factor that kills are a big stage as well. Yeah. I mean, for 20 points a kill, that's a lot of points. So if you're not having a great game and maybe you have to decide either I die to the blue or I take out the team next to me, getting those points is going to be critical. And looking at the initial loot stages, we have Team 19 and Team 8 standing up next to each other in the Georgia Pool region. We have Team 1 and Team 12 in the apartments. And this is going to be a factor now where getting that early loot is going to be super important, but they're so close together, this could be early skirmishes as well. I wouldn't be surprised if we see a little bit of window to window. Oh no, trying to make the run across, he gets hit with a car right off the get-go. Is he going to turn it back around and try to get this? He's trying to get away. Yeah, they're going to. There's a whole squad in there. Oh, there you no. go. That's not the way you want to start a tournament, to say the least. The first man out of the game. They got another couple down. You can see the guys from squad, they got knocked out of it. So how's he going to make anything off of this? They're trying to crawl around, getting a little bit more health back. They're jumping out. They're want it. Coming out with full force, but look at stepping out with style. He wants it. He's got the guns. They don't. He's got to go for the reload. Can he hit anything off of this? He's just spraying away. Shots going out, but it's going to be the closer people, and that's going to be all she wrote for him as well. That's 2 early casualties coming out for Team 7. That's an unfortunate turn of events. The UAZ drives by, takes out one. He tried to defend his teammate. He did get one down, but just unable to complete that fight. And that cost them 2 members early, and that's what we're talking about, getting a good start, and that's not it. All right, we got our guys never slow down kind of hanging out over there, but a little bit of repositioning coming over on the side here. We got a little Georgia Pool. Everybody's just kind of keeping an eye on each other, because we talked about the importance of survival. A lot of these teams are going to try to avoid as much contact unless it's just required as possible. If they feel like they have to get these kills in order to get some type of reprieve to survive until later, that's usually what most phenomenal players at PUBG tend to do. Checking in the Georgia region, there are, I think, 4 or 5 separate teams in that area. Yeah. We've seen that circle center around the shelter farm area. They will all be heading into the east. And that is going to be meaning that Team 4, finding that early center position, is going to be in a good spot. So for them, it's a matter of, do you want to defend? Do you want to stay inactive? Maybe collect some loot and just kind of hang out. I mean, farm is all right, so it's not like they necessarily need to move by any form of factor. They do have center of circle, and naturally that gives a mathematical chance to be in the next circle, but it's not the most defendable of locations. You might actually see them make their way a little bit more towards the north, maybe play along the Potato Hillside, maybe move up towards Death Road, see first red zones kind of coming in. Going to be a little bit of discouragement, but really, nobody's really going to have to contend with it too much. So, the initial loot phase still underway, and that eastern side of the map is actually devoid of many teams. That western side, however, lots of players there, especially around the Pachinki area. Well, given the way that we saw the plane path come through, it looks like most people didn't lean into long drops. Right. Everybody just kind of went for a nosedive down on what they feel comfortable with. That's not surprising. First round, play with what you know. Try to fight it out if you have to, but really just try to carve out your own little section. Now it's a matter of, can these teams disengage from each other without taking casualties, without losing the resources they need for the mid-game and the end-game. Resource is so important, being able to maintain meds, armor, ammo, especially after a fight where you get kind of engaged with someone, you take a bunch of damage, you go down, you have to use those meds, those armor. For Team 1, there is I can hear shots happening. Making their way up the stairwell, you can see holding a tight angle, but that's a DP waiting around the corner. That is a ton of bullets and 7.62 ammo. Somebody walks into that is just going to be death. A lot of people having to use Uzis off the get-go because you can see these early skirmishes, maybe not given a chance to get all the way up to the loot that they want. Actually, is he running double Uzi?
I mean, the Uzi is super strong in PUBG Mobile, and that's something that we're going to see a lot of is the Uzi. A little bit. I mean, the DP28's got a lot of recoil, but Uzi up close is a big factor. Shotguns as well. So now this is two teams that we saw in the early stages getting tangled up. I just see one go down. This is Team 12 and Team 1 going at it. And Team 1 with that DP, we just mentioned it. He's got 2 on the go. Another one goes down. Team 12's in trouble. They will trade out one. And just like that, I think that's only the 2 Team 1 members there, and they're going to get cleaned out. They have no support. Just running back over there. Going to be able to get the res back up and active, but there was a lot of destruction that came through that. You can see the DP held that angle, really pushed out a lot of damage, so they're just going to have to get their reses up, get into a reposition. But here we go, trying to capitalize off of it. But the problem is, it might be a little bit too late. Res is already coming through, meds are going to be going off. You can tell that they really, really want this, so they're making the hard push back over for it. Maybe deciding that this is not the play, and they're going to back away and be a little bit more passive. They're waiting outside, waiting for that audio information. Hide down the bush, you know, Team 6-9, they're just kind of hanging out inside of here. You can tell that they want to play this aggressively, though. Look at the positioning. Already one person down there. You can see Team 12, they got a little bit of a move going around the outside of it, and this is going to be never slow down, caught up with them. So interesting to see how we got Deadman on the outside of this and how he opts into playing it. He's going to be running right next to Champ. Might be surprised here in the lower end of this apartment building. They're in the zone, and they have now 4 strong above, 2 down below on Team 1, and they have to be very cautious. And really for Team 12, they could get caught out and lose one quickly and equalize the playing field. Yeah, it's all going to be about how Champ opts into playing this. Takes the shots, but goes over the line. Look at the numbers just charging in there. That is turning out terrible for them. Unfortunate turn of events, and Team 1, I think, is going to be the first one out of this game. That is the first team eliminated, down to 19 teams early as Team 12 completes the wipe, and that is going to be it for them. All right, now coming back over here to Yaznaya, a little bit of a standoff going on here. A couple of pot shots going back and forth. As I know one of the favorite names is now on screen, as you can see. Good old ass killer. Yep, yep. He's letting people know. That's what he's trying to do over here. So for Team 17, they're across the street. They're looking towards Team 10. They're running around looking more for loot from the looks of it. You have to wonder, is Team 10 aware of the fact they have an enemy squad right across the street? Similar situation here in Lipovka, joining in with Team 4 and Team 7. Team 7 we saw caught up into a little bit of a fight earlier, trying to get their little bit of reposition with what they've got remaining. They're trying to just recap. A lot of these teams are just kind of playing off of a recoil position based off of early skirmishes. But look at this movement. You can tell that everybody's just kind of moving as a pack at this stage, staying close together so that way if they get caught in those close range skirmishes, they can just throw numbers at it and just whittle everybody down. Numbers and teamwork so important. We talked about this early, and teamwork is not leaving teammates behind, so everyone's going to get in this Dacia, drive away, and that's going to be it for the Lipovka loot stage here for Team 17. And we've already seen some of the factors that are going to be successful for some of these guys, which is moving as a squad, moving together, and just taking fights as a team. Well, back over here right now with the Ravengers. Looks like they found themselves a new home. Going to run back over there. Meanwhile, our guys down there all by their lonesome in Military Base Island are going to be the Chiefs. Just kind of looking around. They got plenty of loot. Nobody is really messing with them, but they don't have the circle. They don't have the circle. They don't have to move right away, but they have the entire military base to themselves, so that's going to be very good loot early going, and that's going to be a good start for them. This is what you need here in a first game where conservative style is going to be the play, and they're going to have great loot, and they're going to be able to move on easy, and they have no one camping on the Eastern Bridge, so it's going to be an easy early game for them. Now, here comes the gamble if you're Chiefs. Okay, I said the fact that you don't have the safe zone. Technically, they are inside the safe zone at the direct time, but very minimal chance that the circle is going to come over there. So they're going to have to figure out at some point, when do they make the play? Do they extricate themselves from Military Base Island, or do they take the risk? Do they take the gamble and wait for it and pray everybody has to come to them? This is kind of what we were talking about beforehand about that adaptation and how do you choose to play PUBG. Team 19 under no pressure right now, but are going to be taking some early zone damage. They've completed their loot phase, and now they have to make their way in. They're actually the furthest away from the zone, all the way on the western side, and that's going to be an issue for them. Taking that early damage, especially on the side of the play zone where there's going to be so much pressure, so many teams making the entry. And look at this, we got a fight happening on the roads. It's Team 14 that took them down. Getting everybody out of that motorcycle. Look at this, just getting some nice shots onto it, and they aren't done. They aren't even stopping for this. They don't care. They're continuing the hunt.
Now it looks like we saw somebody jump out of the motorcycle. Are they going to capitalize based off of it, though? Team 14 cruising by. They did take one down. They're not going to finish, as you said. Team 11 might be able to res their teammate, but Team 14 not out of the woods yet. That's Team 11 trying to support, taking those long distance shots, nothing landing super hard to hit a vehicle on the move like that. Well, it's what we talk about with control inside of PUBG Mobile. Is once you kind of lay down and you claim your zone, you have to make sure you hit some shots, you scare everybody away from moving into your safe zone. You kind of create this bubble around you. So you want to make sure that anybody that's coming on vehicles, on foot, they take as much damage as humanly possible, or at least just hear loud enough noises to scare them away and make somebody else go somewhere. Rejoining with Team 12, looks like they're going to have some friends, or at least with each other for a little while, as they found a nice center position to work with. Up in Milta, it's Team 5, trying to continue their loot stage. I think they want to get on this vehicle, this UAZ, and get away from here. As most teams making their way in now, the early rotation, and for those wondering, rotation phase when everyone's in their vehicles and moving around, the first one is about to complete. Usually it's that moment once the blue zone starts making its way in, everybody just hops into their vehicles, repositions based off of it. But with a couple of these teams in vehicles very late, they could opt into the moment the new safe zone pops up, just beelining straight towards it. We can see that those guys that were down around farm, everybody's kind of making their way up towards that school apartments area, but the circle does shift back over towards Milta Power Prison in that general vicinity. So now we're going to see a lot of people that are specifically in the northern part of the circle going to just have to book it back down into this area, because if they want to get a good position, there's not, I wouldn't say a ton of places for this many teams at this stage. Look at that area around the Razak and into the zone. There's so many players coming in rotation there, and that's going to be a big factor. Early fights are going to happen. There's a lot of chance for third-party fights where maybe you're engaged with one team and another team shows up to engage you as well. And that's going to be an issue on that side of the zone. And don't forget, we do have Team 12 and Team 2 that's presently right next to school. There is a red zone that's coming down, and that's going to slow them down. We talked about these rotation phases, making your way in early, specifically trying to carve out that area of the map. When you have the red zone that kind of falls onto you, you kind of bide your time and you hang out inside the buildings, and that doesn't give you a chance to jump out in the vehicles. And sometimes the red zone even takes away your vehicles from you, so now you're on foot having to trek it into dangerous territory. Gotta wonder if anyone's going to try and make a play for the crate that's out in that school field area. Bit of a dangerous maneuver considering how many players are there. But that northwestern side is just rife with teams. They're all coming through now, just trying to find any information through vehicles or otherwise. Well, I think that kind of defines PUBG. We've had a lot of conversations about how we talk about PUBG and PUBG Mobile. Is specifically, it's a risk assessment game more than anything else. Like whenever we see these crates that are sitting out, it's like, okay, what can I get out of this, and what are the risks involved? So naturally, the very first thing you look up, 73 people still alive, crate hanging out in the middle of nowhere that anybody around it would have seen. You kind of go, maybe I'll save that one for later. Joining in with Team 13 in the boat, trying to find their way to the main island. Looks like they should have an easy way in. No immediate contest on the coastline. Team 5 is the closest, but they wouldn't be able to see them from where they're standing. And I like the position that they may be moving to. If they move that little peninsula that's kind of hanging out down over there, you make landfall over there, and then you don't have to worry about anybody encroaching from back behind you. So you really only have to focus on anybody that moves into your tunnel of vision. आप दे सकते हो, बट अगर यही केस उल्टा हो जाता है, लाइक आप कोई ऐसी प्लेस पे उतरो जहाँ पे उतनी ड्रॉप्स, उतने गियर अच्छे नहीं है, ना आप सामने वाले बंदे M4 से दे रहे हैं, ना आप शॉटगन से दे रहे हो, तो लिटरली भाई ये तो नाइंसाफी है। पर यार जैसे ही पूरा भाई ये प्लेन स्टार्ट हुआ, ये टीम नोवो जा चुकी थी। अभी तक यार एक मेन चीज तो हम लोगों ने देखी नहीं, फ्लेयर गन भाई। इसमें फ्लेयर गन है नहीं, इन लोगों ने इसमें फ्लेयर गन रखा नहीं, बट अगर होती तब तो भाई मैं बोलता हूँ यार, ऑनलाइन व्यूअर जितने भी हमें देख रहे तबाही मच जाती है यार, लाइव चैट के अंदर लग जाती है। अभी तो फ्लेयर, गो फॉर द फ्लेयर, गो फॉर द फ्लेयर। हम लोग स्ट्रीम करते हैं ना, हम लोग अगर फ्लेयर मिलती है एंड अगर हम लोगों ने यूज नहीं किया तो अपन लोगों की चैट सामने जाती, भाई फ्लेयर कहाँ है, फ्लेयर का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि तो यार लाइव इंटरेक्शन ऑडियंस के साथ में, लाइव ऑडियंस के साथ में लाइव इंटरेक्शन बहुत ही जबरदस्त चीज। और टीम नंबर 15 आगे बढ़ते हुए, अपने पद यात्रा करते हुए, क्या होगा, दौड़ते हुए है, सही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं टीम नंबर 9 यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी, मिल्टा के जस्ट आगे का इलाका अपने आप के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, स्ट्रेटेजी डिसीजन ले रहे हैं या फिर दूसरी टीमों के आने का वेट कर रहे हैं। क्योंकि टीम नंबर 9 यहाँ पे रुकी हुई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनको पता है कि मिलिट्री बेस में कम से कम 2 से 3 टीमें कूदी हैं, वो आती होंगी, उनका वेट सामने हम देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट लेफ्ट 300 में एक और नई ड्रॉप गिरी है,
तो अब वहाँ पे ये देखना होगा कौन कौन सी टीमें वहाँ पहुँचती हैं। 13 नंबर की टीम बहुत ही दूर, उनके पास कोई व्हीकल नहीं, और आगे बढ़ते हुए सर्कल के अंदर मेरे को देखने मतलब ये है कि मतलब ये लोग कैसे चल रहे हैं। लाइक अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, अभी तक अगर कोई टीम, अभी तक हम लोगों ने जो टीम नंबर 1 की फाइट देखी, उनसे छोटी सी गलती हुई, एक बंदा रश कर गया, बाकी 3 बंदे पीछे रह गए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। गाइस हम लोग ड्रॉप में देख सकते हैं फिर से MK14। लाइक ये ड्रॉप को ना MK14 से प्यार हो गया है। मिलिट्री 3 के लेवल 3 के वेस्ट हैं, तो एटलीस्ट अच्छा गुड्स है कि MK14 डिसेंट गन है, बट ना वो एक जो रेंज जो कार 98 M24 ओम दे सकती है, वो आपकी MK14 दे नहीं सकती। एंड रिकॉइल की क्या बात करें, मारेंगे नीचे जाएंगे ऊपर, कोई नहीं रोक सकता। अब ये बोल्ट एक्शन और DMR का डिफरेंस ये हो जाता है कि DMR क्या हो, MK14 DMR, SKS हो गई आपकी, और SLR हो गई, ये सारी DMR है, डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल। फिर आपकी जैसे ही कार 98 है, M24 है, AWM है, ये सब आपकी बोल्ट एक्शन राइफल्स होती हैं, तो डेफिनेटली उनके अपने अपने फायर पावर। और टीम नंबर 14 यहाँ पे एक घर के अंदर बैठे हुए, टीम नंबर 17 के चारों बंदे यहाँ पे अलाइव हैं। ये स्प्लिट हो चुके हैं, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त डिसीजन। ये प्रिजन के लेफ्ट साइड का इलाका है, और ये जैसे कि एक पीछे वाले घर में आप देख सकते हैं बाकी के 2 मेंबर्स और लाइक 2-2 के पेयर में लोग गेमिंग कर रहे हैं, मतलब 2-2 के, लाइक कोई भी एक बंदा अकेले नहीं जा रहा, 2-2 के पेयर में खेल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। लाइक कोई एक अकेला नहीं पड़ेगा, लाइक 1v4 सिचुएशन नहीं पड़ेगी भी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो 2v4, बट तब तक अपना बैकअप आ जाएगा। ये एक बात बोलनी होगी पुअर भाई, अगर आप 2-2 में स्प्लिट हो रहे हो, ये बहुत जिगरा चाहिए यार, ये जिगरा चाहिए। लाइक एक कॉन्फिडेंस, कोई भी मुंह उठा के ये नहीं कर सकता कि हाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ। उनको मालूम होगा कि कितने डेडिकेटेड प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और स्किल्ड प्लेयर्स हैं। उनको मालूम है कि यार कोई दिखा तो हम अपनी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ यार ये वहाँ से आ रहे हैं, चलो उनको इस तरह से टेक डाउन करो, वहाँ से फ्लाइंग करो, और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम प्लान कर पाएंगे उसके आगे लिए। मतलब जैसा जिगरा चाहिए ना, मतलब जो इनका अभी हमने देखा कि कुछ बंदे नोवो पे कूदे, मतलब उनका माइंडसेट ये था कि हम नोवो पे वहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हैं। एंड कुछ लोगों ने फार्म को चूज़ किया, उनका ये रहेगा कि अभी हम रेडी नहीं हैं, मैच में उतर के गियर अच्छा लेके फिर रेडी होते हैं, देन वी विल फाइट। तो कुछ लोगों में ये स्टार्टिंग से उनका माइंडसेट बना हुआ था कि हम लोग फाइट करने के लिए रेडी हैं। टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 6 एकदम आ चुकी है। और जैसा कि हमने अभी अपडेट देखा है, जो वाइट सर्कल है जहां आपको पहुंचना है, उसका जो सेंटर आया है वो मिलिट्री बेस से जब आप बाकी आइलैंड से कनेक्ट होते हो तो टावर और उसके पास का जो एरिया है वहाँ पे सेंटर पॉइंट आया है। तो इस टीम के पास सिर्फ 1 मिनट और 56 सेकेंड्स हैं कि इनको अंदर पहुंचना होगा वाइट सर्कल के। एक बार अगर ये 1 मिनट और अब 50 सेकंड बचे हैं, अगर ये निकल जाते हैं तो आप हो जाएंगे ब्लू जोन में, आप लेंगे ज़बरदस्त डैमेज, और आपको फिर वो डैमेज को कवर अप करने के लिए फर्स्ट एड, बैंडेजेस, पेन किलर और एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा, जो आप वेस्ट नहीं करना चाहोगे। लाइक F4 के बंदे, फैंटास्टिक 4 के बंदे एकदम आग लगा रहे हैं, हमारे उल्लास सोल माफिया एकदम रेडी है, किल्स पे किल्स कर रहे हैं। अभी एक चीज़ देखने को, अगर ये बंदे डाउन कर रहे हैं ना तो उतना रश नहीं दे रहे, लाइक थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं। F4 के बंदे इसी साथ 2 बंदे F4 के खत्म हो चुके हैं, बट क्या F4 अब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है। बिल्कुल, बहुत यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन, और शॉट लग गया है, कहाँ से, खिड़कियों में से मारा है, बाजू वाली बिल्डिंग में से, और AKM का बस था। वाह, जबरदस्त एक्शन यहाँ पे चलता हुआ। M4 पर 4x स्कोप लगा के फाइट करना। भाई ने दौड़ा लिया, भाग के जाओगे तो जाओगे कहाँ। और इसी के साथ पूरी फैंटास्टिक 4 की टीम इस मैच से नेक्स्ट लॉबी में पहुंचा दिया हमारे सोल माफिया ने। बिल्कुल, 19 नंबर की ये टीम यहाँ पे। अब इनका काम, इनके पास मेन इनको क्या चीज़ करनी है कि अपनी हेल्थ रिस्टोर करनी है, और अगर इनके वेस्ट को, गियर्स को, आपका हेलमेट हो गया चाहे आपका वेस्ट हो गया, कोई डैमेज पहुंचा है तो इनको तलाशना होगा कि कहाँ से मैं फ्रेश वाला हेलमेट या फिर वेस्ट अपने लिए लेकर के आऊँ, ताकि जो मेरा डैमेज मिटिगेशन है हैवी बुलेट्स को से बचने के लिए, ताकि मुझे कम से कम डैमेज हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नया हेलमेट या वेस्ट तलाशने के लिए निकल पड़ें। यहाँ पे हम देख सकते हैं टीम नंबर 8 और टीम नंबर 14 के बीच में यहाँ पे काफ़ी अच्छी फाइट चलती हुई। बहुत अच्छा गोल्डी भाई M24 का स्नाइपर जट मिर्जा के बंदे के एक टीम पान सिंह तोमर को डाउन कर दिया है। ये बहुत, क्योंकि क्या हमने देखा था जट मिर्जा बहुत ही अच्छा गेम खेलता है, जैसा हम लोगों ने देखा अभी सेमीफाइनल्स में बंदे ने सिर्फ 2 बंदों ने अपने बंदों को फाइनल्स में पहुंचा दिया लास्ट तक।
तो इनका एक बंदा डाउन होना बहुत नुकसान दे सकता है, और एक पूरा परिवार कैंप कर रहा है शैक में। आपका क्या कहना है गोल्डी भाई? एक शैक में कम से कम 4 बंदे यहाँ पे 15 स्क्वाड के और जो 12 स्क्वाड की, ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं है पर एक दूसरे को एंगेज करने से दोनों ही टीमें बच रही हैं और शायद उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि वो लास्ट सर्कल में जाना चाह रही हैं। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि यार अंदर जाएंगे और फिर फाइट करेंगे, या फिर वो कुछ किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। ये भी एक डिसीजन में से एक ही होता है कि हाँ भाई आपको नहीं लेना है, आपको पुश नहीं करना है, सामने वाले को पुश करना है। पर यहाँ पे स्मोक फेंकते हुए 14 नंबर की टीम और अंदर पुश करते हुए फाइनली पूरा रश कर रहे हैं, लाइक बिल्कुल टाइम नहीं चाहते हैं हमारे यहाँ पे। अगर थोड़ा सा पैनिक हुए एंड डिसीजन माइंड चेंज अपना किया तो बहुत रिस्क दे सकता है। एंड जट मिर्जा को पता चल चुका है कि ये बंदे रश कर रहे हैं, तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। हमारे डीएलएस के बंदे भी एकदम रेडी है गाइस, देखना होगा। एंड गाइस बता दें इनके साथ जिनके साथ जानते वाले जो बंदे हैं, देखना है फाइट कैसी होती है। आपको क्या लगता है गोल्डी भाई? यहाँ देखो बॉस, एक स्क्वाड है ग्राउंड फ्लोर पे, एक स्क्वाड है फर्स्ट फ्लोर पे। दोनों सारे की सारी स्क्वाड है जो अपनी है, एक दूसरे की फुटस्टेप्स सुन पा रही होंगी, पर कितना डिफिकल्ट है यार। ऊपर 4 बंदे दौड़ रहे हैं, नीचे 4 बंदे दौड़ रहे हैं, टोटल 8 बंदे, उनके 16 पैर की आप फुटस्टेप्स सुनो, दिमाग पागल हो जाएगा वहाँ आपका। अगर रश करना है तो इनको यहाँ पे रश करना ही होगा। अदर रश भाई डीएलएस ने नेट से उड़ा दिया जट मिर्जा को। क्या अभी वो खुद भी नॉक हो चुके हैं गाइस? देख 2 बंदे डाउन है जट मिर्जा की टीम के, 3 डाउन कर दिया है हमेंद्र ने, 2 बंदे बचे 2v2 है गाइस। क्या लगता है आपको भाई? और हेमेंद्र भाई को आग लग चुकी है, इनको कुछ तो भी करना पड़ेगा। और ये भाई बहुत दिक्कत की बात हो सकती है, पूरे 3 बंदे डाउन है, 1v1 सिचुएशन हो चुकी है। आप क्या लगता है गोल्डी भाई, कौन सी टीम सर्वाइव करेगी? नीचे भी हैरी बचा है, हैरी एंड डीएलएस बचा है, रिवाइव देंगे हमारे वसु पुनिया को। अभी ये 2 बंदे आ चुके हैं लिटरली पीछे से कूद के, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत ही जबरदस्त। 14 नंबर की टीम बाहर कूद कर अपने आप के, नहीं अंदर ही हैं ये लोग, ओके अंदर ही हैं। और कैमरे से देख पा रहे हैं यहाँ पे 14 टीम ने एक बार फिर से दोनों को ढेर किया है, जो कि रिवाइव होने से बच गए और पूरा का पूरा मामला ही साफ कर दिया है फर्स्ट फ्लोर वाली टीम का। जो रश दिखाया जट मिर्जा की पूरी टीम को सफाया करके भेज दिया है नेक्स्ट राउंड में। तो अभी जैसे कि ये बहुत नुकसान कर सकता है जट मिर्जा की टीम को। एंड हमारे जो उनको ने मतलब एक माइंडसेट बना दिया था सोल के बंदों ने कि अभी इनको मारना है तो मारना है, वो सीधे उसी किराए के घर में घुस गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 नंबर की टीम नोवा वाइटी फाइट करती हुई 19 स्क्वाड से और 17 स्क्वाड से, और साथ साथ फायर लेते हुए भी, क्योंकि अगर आप पीक करके फायर कर रहे हो तो सामने वाला भी तो आप पे फायर कर सकता है। ये बहुत ही एक टेंस सिचुएशन, फ्लोर टू फ्लोर यहाँ पे फाइटिंग चल रही है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग फाइटिंग चल रही है और अंदर घुस करके डाउन किया गया है 17 स्क्वाड को 19 स्क्वाड ने। जबरदस्त गेम प्ले, रश गेम प्ले देखने मिल रहा है, एक्शन इंटेंस एकदम एक्शन पैक गेम प्ले देखने को मिल रहा है। पबजी मोबाइल के ऑडियंस को और क्या चाहिए भाई, मतलब जिस तरह से हमको गेम प्ले देखने को मिला, एक बार अगर किसी टीम ने माइंडसेट कर लिया कि हमें यहाँ रश करना है तो वो सीधे उस घर में घुस जाती हैं। लाइक एक भी ना उनका ये कंफर्म रहता। और इसी के साथ एक बंदे और आ गए, टीम नंबर 19 अभी फंस चुकी है बेचारी। एक बंदे टीम नंबर 30 के और आ चुके हैं नोवा वाइटी। उन्होंने देखा ऑलरेडी फाइट चल रही है, बहुत अच्छा हाथ है, हाथी पे मार देते हैं चौका। फिर से वही सिमिलर सिचुएशन है, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर कि भाई फर्स्ट फ्लोर मेरा ग्राउंड फ्लोर तेरा, और एक दूसरे की फुटस्टेप सुनते हुए। अब यहाँ पे ये लास्ट वाली सिनेरियो में हमने देखा था कि ग्राउंड फ्लोर वाली टीम ने पुश किया था, यहाँ फर्स्ट फ्लोर वाली टीम नीचे कूद गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्लैंक करते हुए एक दूसरे को आजू बाजू तरीके से जहाँ से जगह मिल रही है, जिस खोपचे में जगह मिल रही है, लोग पुश आउट करते हुए। यहाँ पे अगर आप बॉटम राइट कॉर्नर में देखेंगे तो आप एक और कैमरा एंगल वहाँ देख सकते हैं। टीम नंबर 4 टीम नंबर 12 फाइट करते हुए और मैच के आगे वाले सर्कल में पहुँचने के लिए जद्दोजहद करते हुए आपस में। स्नाइप डाउन को आइडिया है कि वो अकेले फंस गए और इसी के साथ आई थिंक इनका ये फिनिक्स स्क्वाड तो जो कि पूरा खत्म हो चुका है। लाइक अगर किसी टीम को चांस मिला तो वो भागने नहीं देगी। मैडम गाड़ी निकाल के भागना चाहते थे बट दिक्कत हो गया क्योंकि एक बार स्पॉट हो गए तो वो आपके लिए। एंड जो पिकअप है ना हमारी दासिया का जो पिकअप है वो आपको कुछ तो भी करना पड़ेगा। स्लो मोशन पिकअप है भाई। अब वो धीरे से बैक में जाएगा, तब तक तो आपको डीपे के दासिया का मैं तो कहूँगा दासिया का पिकअप टाइम इतना है कि अगर आपके पास बैकपैक में AWM पड़ी है उसको डिसमेंटल AWM निकाल के असेंबल करो, फिर आप भाग सकते हो। बट इसका ये फायदा होता है, अगर दासिया ने भाई स्पीड पकड़ ली तब तो आप नहीं पकड़ पाओगे। बट भाई वो जो स्टार्टिंग फेज है
वो लाइक है ना तब तक सारे लोहे भर दिए जाएंगे आपके अंदर। बिल्कुल। यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लू जोन के जस्ट एजेस पे 14 नंबर की टीम है, 16 नंबर की टीम है और सेकंड नंबर की टीम और 9 नंबर की टीम, जो कि सर्कल के अंदर अभी पुश उन्होंने किया नहीं है। और ये स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि बाकी टीमों को आपस में लड़ने दो, हम पहुंचेंगे टॉप 15 टॉप 10 में। तो ये बात है यहाँ पे अभी। लाइक जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादातर चिकन डिनर के हैं, तो सबका जो दिमाग एक तरह से सेट हो रखा है कि भाई इजी खेलते हैं, फाइट करने दो, जितने कम लोग हमें लास्ट में फाइट करना पड़ा अपनी टीम के लिए उतना ही अच्छा है। यहाँ पे वेट एंड वॉच का सिनारियो हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो वेट एंड वॉच को अगर 100% में हम अगर काउंट करें तो 70% जो है वो फेवर कर रहा है वेट एंड वॉच को। 30% कहीं आप बंदे चांस ले रहे हैं कि हाँ यार ठीक है मारते हैं, चलो पुश कर लेते हैं, ऐसा ये एक्शन देखने को हमें मिलता है। एक बार फिर से स्मोक करके ऊपर गए हैं और अपनी हेल्थ रीगेन करने का चीफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। वो बेचारा बंदा कोने में बैठ के हील कर रहा था पर वहाँ पे लगा रहे सतर्क रहने की आवश्यकता थी। वहाँ पे आप हील कर रहे हो, आपको फुटस्टेप सुनाई दे रहे होंगे, आपके पास चांस था, आपके पीछे विंडो थी, आप विंडो से बाहर कूद सकते थे, भागना था। बट वो जो पैनिक एक बार आदमी हो जाता है, लाइक अकेला अगर यही इसके टीममेट होते तो लाइक थोड़ा, बट एक बार अगर पैनिक हो गया तो वहीं पे गेम हाथ से चला जाता है। वहाँ पे एक कहावत और याद आती है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। जी हाँ भाई साहब। हमारे गोल्डी भाई क्या होता है, मतलब ये कहाँ से आते हैं गोल्डी? बस ये तपस्या चलती रहती 24 घंटे और निकलते रहते हैं। लाइक मैं ना आपकी बातों का इतना बड़ा फैन हूँ कि क्या बताऊँ, मतलब जो डायलॉग्स हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं। अरे अपनी पबजी कम्युनिटी जो है ना, पबजी मोबाइल कम्युनिटी, वो भी नेक्स्ट लेवल की है भाई। मतलब इतनी जबरदस्त कम्युनिटी। कुछ इमोट्स लाने चाहिए पबजी को, उसमें हमारे गोल्डी भाई के कुछ डायलॉग्स हैं वो फिक्स रहेंगे, लाइक AWM कर दूंगा, तो ये पबजी और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू सर्कल अंदर क्लोज इन होता हुआ व्हाइट सर्कल की तरफ से आप अगर टॉप राइट में देखेंगे तो आप मिनी मैप देख सकते हैं और यहाँ पे मेन गेम प्ले आप देख सकते हैं। एक जो सेकंड नंबर की टीम है अंदर पहुंचती हुई और 11 नंबर की टीम अभी सर्कल से बाहर है। 19 की स्क्वाड है, उसमें से एक टीम बाहर है। सर्कल कितना छोटा है और 40 बंदे अलाइव हैं। 40 बंदे अलाइव हैं, वही हम बात कर रहे थे कि सारे बंदे प्रेफरेंस दे रहे हैं वेट एंड वॉच को 70% और फाइंड एंड किल को 30%। तो आराम से खेलना चाह रहे हैं, बट पूरे परिवार को गाड़ी उड़ा दे। कुछ बंदे सर्कल के बाहर ही फाइट कर रहे हैं, कुछ अंदर, मतलब अब जिस साइड पैर जाएगा उस साइड बंदे आएंगे, अब कोई किसी को छोड़ नहीं सकता। यहाँ पे शिवम 19 स्क्वाड के एक प्लेयर बहुत ही हार्ड सिचुएशन में से, उनको डैमेज कहाँ से लग रहा है मुझे लगता है उनको खुद को नहीं पता, पर पेड़ के पीछे रुक करके अपने आप को फुल बैंडेज कर रहे हैं और ऑलरेडी बूस्टर्स उन्होंने ले रखे हैं, या पेन किलर या फिर एनर्जी ड्रिंक, ताकि अगर डैमेज लग भी रहा है तो सर्कल से सड़क क्रॉस करके जब वो बिल्डिंग की तरफ जाएंगे तो उस दौरान उनकी हेल्थ धीरे धीरे फुल होती रहेगी, रिप्लेनिश होती रहेगी। लाइक DLS के बंदे मतलब एक से एक प्रो टीम है एक बिल्डिंग में, INC के बंदे थोड़े से बटे हुए हैं, CSPG के तीनों बंदे ऊपर वेट कर और एक बंदा डाउन, CSPG का एक बंदा डाउन तो INC का भी एक बंदा डाउन हो चुका है। अब स्ट्रैटेजी क्या माइंड में चल रहा होगा, क्या रश करना चाहेंगे? अपना कमेंट पिछला वाला वापस लेना पड़ेगा यार। बंदे अंदर घुस के मार रहे हैं, अंदर घर में से निकल रही तो हम आ रहे हैं पूरी की पूरी स्क्वाड लेके। और स्मोक हम देख सकते हैं कितना स्ट्रेटेजिक है, बंदे कितने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, पॉसिबली ग्रेनेड थ्रो करते हुए। ओ भाई जबरदस्त फाइट, एक स्क्वाड को ढेर करने में लगे हुए थे 12 नंबर खिलाड़ी NSD, पर स्क्वाड मेंबर सतर्क थे पूरी तरह से। और 14 की स्क्वाड के एक प्लेयर और डाउन, 12 स्क्वाड पूरी तरह से विनर है। एक स्क्वाड 14 वाला और बंदा बचा हुआ है, अगर राइट टाइम पे नहीं पहुंचे। CSPG चल रहा है, DLS की पूरी बंदों को खत्म किया। मतलब भाई जो स्पीड है, रिफ्लेक्शन है, मोमेंटम है, वो मतलब जिस हिसाब से लोग बना के रखे हैं वो अलग ही लेवल का। आपको क्या लगता है गोल्डी भाई? साथ साथ स्किल की आपको जरूरत है, पर आपको वो जो कंपोजर है ना वो नहीं खोना कि हड़बड़ी मारे कुछ भी तो क्या, अरे ये क्या हुआ क्या हो गया। कंपोजर आपको बनाए रखना है। सर्कल में भागना पड़ेगा, फाइट करते करते इन लोगों ने सर्कल और का बंदा डाउन, अपने नाम का परिचय बहुत ही मतलब यहाँ पे बहुत ही पछतावा हो रहा होगा। लाइक इतना फाइट किए, इतनी टीमों को मारा, बट क्या 12 के बंदे पहुंच पाएंगे? CSPG ने ढूंढ लिया था और पूरी की पूरी स्क्वाड गायब। माय गॉड, कम से कम 5 से 6 बंदे गायब, गाइस लिटरली एक सिंगल स्क्वाड गायब, बाकी दूसरी स्क्वाड भी, ये दूसरी स्क्वाड भी बात थी कि पूरे बंदे उसी सर्कल के बाहर लड़ रहे थे। सर्कल एकदम से आया, जो लड़ रहे थे वो नहीं रहा, जो अंदर था वो बच गया। और प्लस वहां पे एक स्क्वाड नहीं, वहां पे 2 स्क्वाड सर्कल के बाहर मरी है।
तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही वेट एंड वॉच वाली पे भरोसा कर लिया उन्होंने वाली स्ट्रैटेजी पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं अमित शर्मा 18 स्क्वाड के प्लेयर और पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पे जमी हुई है सर्कल के सेंटर में, उनको बाहर निकलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टॉप 11 सिचुएशन में हम चल रहे हैं यहाँ पे, और उनको तो मूव इन करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ खिड़कियों से ताकना झाँकना है कि कौन उनकी तरफ आ सकता है, और कोई ऐसा बंदा कहीं है जो कि जिसके पास कवर नहीं है तो हम उसके ऊपर फायर करें, उसको टेक डाउन करें और अपनी टीम के लिए एक और किल करें। मतलब देखने वाली बात है कि अगर चाहती CSPG के बंदे चाहते तो वो सर्कल में आ सकते थे, बट उनसे गलती ये हुई कि उनको राइट साइड में उन्होंने स्पॉट कर लिया टीम नंबर 12 के बंदे क्या को। विजन था यार ये ग्राउंड में लेते हुए बंदे को। स्पॉटिंग है, मतलब बंदा सोया हुआ है, सांप बना हुआ है। नहीं, तुम सांप नहीं बन सकते, तुम सांप तो हम नेमला लो बेटा। जैसा कि हमने बताया कि अगर तुम खिड़की से झांकोगे भाई तो हम भी डैमेज देने के लिए तुम्हें तैयार हैं। यहाँ से एक एक कोना पकड़ के जहाँ से जिसको जो खांचा मिल रहा है यार, 16 नंबर की स्क्वाड जैसे कि हमने देखा थोड़ा सा ही जगह है, पर वहाँ से M16 से 3x स्कोप लगाकर अंदर देखते हुए यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त फायर खोल दिया गया है 18 नंबर की टीम से 16 नंबर की टीम को। खिड़की से लोगों की बारिश कर दी है हमारी टीम नंबर 18 ने। मतलब भाई स्मोक में अंधा गोली, लिटरली अंधा, क्योंकि मैंने आज तक इतना ज्यादा स्मोक देखा नहीं है एक साथ किसी टीम को फेंकते हुए। देख रहे हो, मतलब पैटर्न देख रहे हो, क्या मस्त पैटर्न बना के पुश करना चाहते थे। आज हमारे माजी भाई पीछे से जानते हैं कि यहाँ पे टाइम है, हम पीछे से आ जाते हैं, आराम से रश करते हैं। बट भाई हमारे अमित जो मार रहे हैं ना बंदा, लिटरली जो स्मोक में अंधा मार रहा है। जैसा आपने गोल्डी भाई बोला था आपने कि लक की बहुत जरूरत है इस मैच में। लक की जरूरत है, अगर आप सेंटर में हो तो वो आपके लिए इतना बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। जैसा कि सेंटर वाली टीम 18 नंबर की स्क्वाड, मैच बहुत हद तक उनके हाथ में, उनका हारना इस मैच में बहुत मुश्किल। और 2 सोलो बंदे हैं और एक पूरी 4 की स्क्वाड है, और उनको कन्फ्रंट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि एक 10 नंबर नाजी 420 और 16 नंबर की स्क्वाड से 2 सोलो बंदे हैं। उनको कन्फ्रंट करने की ज़रा भी कोई भी आवश्यकता नहीं। पिछले 7 मिनट से वो सेम बिल्डिंग में है और सर्कल उनके तरफ ही रहा, ये उनका लक है बॉस। मतलब जैसा आप हमारे गोल्डी भाई ने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको PUBG में आपको जो चाहिए वो लक फैक्टर भी बहुत चाहिए। लाइक अभी टीम नंबर 18 के पास पूरी स्क्वाड है, बट अगर ये इस मोमेंट पे हारते हैं तो ये इनके लिए बहुत ही बुरी खबर होगी, क्योंकि यहाँ तक पूरी स्क्वाड सरवाइव करके आई है, इनको बस 2 सोलो बंदों का काम लगाना है और ये यहाँ पे सफाया कर दिया गया है, डाउन कर चुका है। तो ये फाइनली ना हमारे माजी भाई ने काम इजी कर दिया है हमारे टीम नंबर 18 के लिए। 4v1 सिचुएशन है, अब देखना होगा क्या। मुझे तो लगता है वो लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं, यस, लेफ्ट से राइट से, बिल्कुल। अब कमेंट उनको पता चल गया कि बंदा है कहाँ, बट अरे भाई डाउन क्या हमारे माजी ने, और एक बंदा कितने से लड़ेगा, एक अकेला चना बाहर नहीं पहुंच सकता, एक बंदा कितने से लड़ेगा। बट देखा जाए तो उसके पास 7 किल्स थी, मतलब बंदा बहुत ही अच्छा खेलता है। हमारा एक बंदा नहीं टिका सकता था, वो भी चारों लोगों ने चारों साइड से घेर लिया। और फिर भी कहना होगा कंपोजर नहीं खोया, एक बंदे को डाउन जरूर किया, क्योंकि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो तो आपको सारे प्लेयर्स के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, आपको हर जगह कंसंट्रेट करना होता है और अपना टारगेट चूज करना होता है। पर मेरे हिसाब से वो फाइट काफी अच्छी रही, एकदम ही एक तरफा फाइट नहीं रही कि हाँ चारों ने मिलकर एक को घेर के मारा, ऐसी फाइट नहीं। तो बहुत ही जबरदस्त वो फाइनल मोमेंट थे टॉप 5 सिचुएशन वाले। मतलब बहुत ही अच्छा गेम प्ले देखने को मिला, बट वो कहते हैं ना एक बेचारा चारों से कहाँ लड़ता। अगर 1v2 सिचुएशन भी होती तो भी हमारे साथ माजी भाई कुछ वहाँ पे अचंभा दिखा सकते थे। एक को डाउन कर चुका था ऑलरेडी एंड दूसरे को डाउन करने वाला था, एंड तब तक पीछे से आक्रमण। पर अगर यही सिचुएशन हम ऑपोजिट कर दें कि 10 नंबर वाले जो स्क्वाड है वो अगर होती 10 नंबर का जो सोलो बंदा था, मजा आ गया गाइस। हमारे अभी तक का जो भी गेम प्ले देखने को मिला ना, लिटरली मजा आ गया। मतलब वो बोलते हैं ना गोल्डी भाई, पैसा वसूल गेम। आप लोगों को भी गूज बम्स तो आ ही गए होंगे। ये फाइनल जो फाइट थी टॉप 5 सिचुएशन वाली बहुत ही जबरदस्त निकली, और मैं जैसा कि एक बार फिर से मुझे रिपीट करना होगा, वो बहुत ही जबरदस्त मोमेंट था। सोलो बंदा बाहर था पर उसने कंपोजर खोया नहीं, एक बंदा लेफ्ट से आया, क्योंकि आप इतनी जब क्लोज होते हो तो आपको चारों की स्क्वाड का जो फुटस्टेप्स हैं वो सुनाई देता है। अगर सिचुएशन ऑपोजिट होती, सोलो बंदा अगर बिल्डिंग में होता और 18 नंबर की स्क्वाड अगर बाहर होती, तो शायद और ज्यादा हीटिंग सिचुएशन हमको देखने को मिलती। और जैसे गोल्डी भाई एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो मैच हुआ था पहले वो तो लाइव नहीं किया था गाइस, बट प्ले जोन से लिटरली प्ले जोन से इतनी प्रो टीम CSPG की टीम, और आई थिंक रॉ ऑफिशियल उनको तो मार दिया था, और 2 टीम जो मतलब पूरा आई थिंक 8 बंदे थे टोटल है ना, CSPG की फुल टीम
प्लस जो अदर टीम थी, दोनों प्ले जोन से भाई, मतलब लास्ट सर्कल में पूरा कुछ कहानी ही बदल दिया यार। मतलब उन्हें निकलने नहीं दिया। CSPG चाहती तो वो अपनी टीम को लेके जा सकती थी, बट उन्होंने राइट साइड में स्पॉट कर लिया कि टीम नंबर 12 के बंदे भाग रहे हैं, और वहीं पे उन्होंने निर्णय ले लिया हम नहीं जाएंगे तो आप कहाँ चले भैया, थोड़ा लोहा तो लेते जाओ। तो लास्ट वाला मैच काफ़ी ज़बरदस्त निकला है, बहुत ही इंटेंस था, और हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं एक साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, आई एम श्योर, हम सब श्योर हैं। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते जाइए, जितना भी आप शेयर करते हैं, और अगर आप PUBG मोबाइल से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते जाइए। वो तो है। और एक चीज़ गाइस, ये तो फर्स्ट मैच था, तो रैंकिंग के हिसाब से पॉइंट है, जैसे कि हमने आपको बताया था, रैंकिंग के हिसाब से पॉइंट है, और जैसे ये गेम खत्म हो जाएगा। और यार टेंशन ना लो भाई, हम भी आ रहे हैं कमेंट्री करने। हाँ, टेंशन ना लो, आप बोल रहे कंटेंट आ रहे भाई, हम लोग टेंशन ना लो, ओके। हमारे कंटेंट भाई थोड़ा विनम्र परेशानी। यस गाइस, तो चलो अभी हम कुछ इंटरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि एज यू नो गाइस बहुत सारे टीम्स थी, तो हमने कुछ इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं, हर टीम का क्या कैसा है। तो चलो यार मिलते हैं इंटरव्यू के बाद। इन्फ्यूज सेकेंड तो, और ये जैसा कि हम बता सकते हैं, ओप्पो They're already giving nightmares to the rest of them. But you guys, first of all, they're from Mumbai, so make some noise. I'm from Mumbai too. So I'm really stoked already about this. Take us through your journey from the qualifiers till today. Actually, in the qualifiers, we weren't pretty confident about our team. That's true. But then all of us, we played well. Our chemistry was good. Everything went good. Luck was there. So we made it to the finals. Quarterfinals was pretty difficult. We thought we wouldn't make it to the finals because we made huge mistakes in the quarterfinal. But we learned from our mistakes. That's the main thing. And we did that. And today we are here. And we won the first match. And we hope we are constant. But tell me one thing, why is it you're looking so restless? Yeah? Okay. So guys, excited. I think you he's have really just excited. won one game right now. So who do you think is your opponent in the finals? Who do you think is a strong team and give a good competition to you? First, I think Squad 99 and F4. That's it. Hey, you're from Mumbai. You should say we are the best. We are the best. Yeah, that's about it. Can we have a huge round of applause for Terrifying Nightmares? And you guys have done a fabulous job. Please give them a big round of applause, guys. Make it louder. And you guys celebrate your moment of victory, and we will get back to you in the next game. Thank you so much. Yes. But before you leave, don't let it get to your head, because 4 more rounds to go. All the very best, and all the very best to the rest of you too. Getting back to our people out here, as we promised you, the two of you who at the end of the first round, the activity that we had, and you won, I want you to run up on stage. I didn't get your names earlier. Come on. Come on, if you'd repeat the act for us. The guy who lifted. If you repeat the act for us, will be nice. And also the guy who was being lifted. Lift him up. Oh, come on. Lift him up right now. Come on, there we go. Yeah. Sweet. Okay, you know what? Looking at your energy levels, we were so happy. So instead of giving a 1 phone, we have doubled it up. We are giving you 2 phones. So at the end of every round, each of you win 2 phones. 2 lucky winners end of every round. Congratulations. So you're not just going to be calling his phone. You're going to be using your own Oppo F9 Pro and calling your buddy on the same phone. Please give them a big round of applause, guys. Yeah, that's about it. Thank you so much, and we will get back to you there. Thank you so with much, the Hati. Congratulations. Gifts. Thank you. And from here we head into a quick break, but you guys stay tuned, because I told you this is going to be insanity to next level. But keep the energy level going and keep the smiles on too. We'll see you in a short while from now. Thank you. Over to the break.
It was a really great. It was a really great.
NSD had momentum really, but they just didn't have that position there. I think when they had